Where you go for the shopping? Yes, yes. Where you go for the shopping, dear? बोलो बेटा. Ma'am, market. Ma'am, Market. So where the market is situated in Jammu? कहाँ है market Jammu में? Where it is? Ma'am, city. ma'am in City. 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 Right. We have market in city areas or in the main area. So the question arises here. What is market? Before that, we are going to start the chapter market around us. All of you, please mute yourself. Listen to me carefully. Nobody will share the screen. And please open your book on page number 255. So in this chapter, we'll study what is market, what is its importance, and what is the benefit of having a market nearby your locality. We will also study about the different types of market and the difference between buyers and sellers. So first thing is take out your pencils and mark the lines. First para for a market. A market is a place where buyers and sellers are involved in sale and purchase of goods. मार्केट क्या है? मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप गुड्स परचेज करते हैं एंड वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर इन्वॉल्व इन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इट एस्टैब्लिशेस अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. मार्केट क्या है? मार्केट जो है लिंक एस्टैब्लिश करता है between the producer and a consumer. So when we talk about markets, there are different types of markets, namely weekly market, shops हो गई, shopping complexes are there, malls. Before that, you should know the meaning of consumers or traders. Consumers क्यों होते हैं? Like the people who consume goods are known as consumers. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Like ma'am. you are consumers, you consume goods. आप लोग कौन हो? Consumers or customers? Now who are traders? Traders कौन होते हैं? The people who bring the goods from producers to consumers are called traders. तीन parties involved है बेटा, ध्यान से सुनो यहाँ पे. Producers, consumers and traders. Producers कौन होते हैं? Those who manufacture goods and services. Who are the producers? Those who manufacture goods and services. अब जब हम उस goods and services को use करते हैं, we are the consumers. अब इन goods को हमारे पास लेके कौन आएगा? Traders जो हैं, they bring the goods and services from producers to consumers and they are known as traders. समझ आ गया first para? First para is clear? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Next para में क्या लिखा है? So there are different types of markets. कौन कौन सा market है? Listen to me now. The different types of market. We have weekly market, shops, shopping complex और mall. Wholesale market, retail market भी होता है. So the profit earned by different markets varies. जो भी profit इन markets में earn करते हैं producers, traders, वो differ करता है, अलग अलग होता है. It depends upon the type of investment. Mute yourself. It depends on the type of investment made by the seller and buying capacity of the customer. So, in present times, goods are sold by online marketing and home delivery also. मिलता है आपको goods online shopping करते हैं आप? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Online shopping Flipkart है, we have Snapdeal, we have Myntra. और बताओ मुझे shopping कौन कौन सी apps हैं? Amazon. Flipkart. Ma'am, Amazon. 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 Ma'am, Limeroad. Ma'am, first try. Ma'am, Flipkart. Ma'am, Myntra. Yes. Ma'am, Amazon. Yes, बेटा आगे सुनो Ma'am, मेरी बात. अब यहाँ Ma'am, ऑनलाइन मार्केटिंग होती है. Flipkart. यस, यू ऑनलाइन बाय द गुड्स और आपको गुड्स होम डिलीवरी हो जाती है, होम डिलीवरी मिलती है. मैं क्या पूछ रही हूँ आप? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ओके, आपको शॉप पे जाना नहीं पड़ता है. क्या होता है? गुड्स आपके डोर स्टेप पे आ जाते हैं. Yes, Yes, ma'am. ma'am. आपको 6 बजे के 7 बजे वो पार्सल मिल जाएगा और आपको एक टाइम पे आपको पार्सल डिलीवर कर देते हैं, राइट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. ये क्या है? टाइप ऑफ मार्केट. तो फर्स्ट मार्केट हमारा आता है वीकली मार्केट. टू गेट द स्क्रीन एंड म्यूट योरसेल्फ and read the para side by side. तो वीकली मार्केट क्या होता है? नाम से पता चल रहा है वीकली मार्केट. इट्स अ मार्केट बिकॉज इट हेल्ड ऑन ए स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक. तो संडे को सेल लगती है सिटी में, देखा आपने? परेड में, रसी जॉनी में, है ना? वो क्या है आपका वीकली मार्केट, मतलब वंस अ वीक लगता है. तो शॉप में भी परमानेंट और हॉकर टाइप. शॉप जो परमानेंट भी हो सकती है और हॉकर, समझते हैं हॉकर्स? पूरा हॉकर्स जो रोड साइड हॉकर्स, हॉकर्स HAWKER.
Ma'am, hawkers are those persons which sell the goods at the roadsides. Yes, this person who sells goods at the roadside. Have you ever been on Sunday to the market? गए हैं कभी आप संडे को मार्केट में जहाँ पे सेल लगती है? Yes, ma'am. फिर आपको Yes, वहाँ पे कुछ ma'am. परमानेंट शॉप होती है जो परमानेंट खुलती हैं Yes, ma'am. एंड Yes, सब ma'am. ऑल्सो कुछ ऐसी मिलेंगे जो आपको फिक्स डेट पे नहीं दिखेंगे, वो सिर्फ आपको परमानेंट संडे को ही दिखेंगे. ठीक है, संडे को क्यों दिखेंगे? बिकॉज इट्स अ वीकली मार्केट. So they provide different goods and sometimes goods on credit also. So there are thousands of such markets in India. People come here every day. People come here. People come here for their everyday requirements. The traders set up shops for the day. Please mute yourself, girl. It's very disturbing. Okay, beta. So traders set up shops for the day and then close up them in the evening. Morning में shop open होती है, तो shop evening में close हो जाती है. Have you seen this? Yes, ma'am. Yes. Ma'am. Yes, ma'am. Next is many things are available in the weekly market at a cheaper rate. होता है सेल लगती है, आपको cheaper rate पे जो है goods मिलते हैं. कंपैरेटिवली जो बाकी के मार्केट में आपको गुड्स मिलेंगे रेट पे, संडे को या तो वीकली मार्केट में आपको गुड्स का जो रेट है वो कम हो जाता है. इट इज तो सही है ये. Yes, ma'am. हाँ, ask your mother, ask your sister, they must be knowing. Then weekly markets even have a large number of shops selling the same goods, which means there is a competition among them. Competition सुना ना, देखा आपने? वो बोलते सेल 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 250 में, 150 में, 300 200 सुना है, तो वो रेट्स बताते रहते हैं. Yes, रेट्स ma'am. क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे ट्राई टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स. है ना, कंपटीशन होता है वहाँ पे, होता है कंपटीशन. Yes, ma'am. और वो कस्टमर्स को थ्रू रेट थ्रू प्राइसेस अट्रैक्ट करते हैं. Next, we have the one advantage of weekly market that most of the things of need are available in one place. Pictures में देखो, ये weekly market का आपको मैंने दिया है. इसमें क्या होता है? Most of the things that we used to have, we used to buy, जो हमारी needs की चीजें हैं, वो एक ही जगह पे हमें मिल जाती है. Clear? Excuse me, ma'am, can you speak little louder? Please ask this girl who to she is. Please mute yourself. Mute yourself. Ma'am, when friends to are unmuted, so voice is coming. Yes, beta, will you mute yourself? If you don't mute, I will not share the screen. Okay, weekly market is clear to everyone. Weekly market. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, Take out please page. market once again. Weekly market. Hello. Yes, ma'am. Weekly market. Yes, ma'am. Okay. So weekly market is a market. It held on the specific day of the week. एक specific day पे ही होता है, ठीक है? The shops in the weekly market may be permanent और hawker type. Means आपको जो है रोड साइड पे hawkers मिल जाएंगे, ठीक है? Then these shops, this market even provide goods on credit basis. उधार पे भी goods मिल जाते हैं यहाँ पे. And thousands of people come here for the everyday requirements. Clear? And many things are available at a cheaper rate. वो सस्ते रेट पे, cheaper rate पे आपको कुछ मिल जाएंगे. Then there's a lot of competition among the people, among the hawkers, among the sellers in the weekly market. And the competition is just because to attract the number of customers. And one more advantage of this weekly market is that everything is available under one roof. आपको सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाएंगी. Maybe fruits हो गए, vegetables we can say, then your books and your clothes, your footwears, everything you will get under one place only. So weekly market is clear. Yes, ma'am. Ma'am, what is the meaning of hurdles? Hurdles होती है रुकावटें, problems. Hurdles are problems. ठीक है? Okay, ma'am. हाँ, hurdles होती है problems. Now, next we have the retail shops in the neighborhood. Have you seen the type of shops in Excuse me, Bhola city? ma'am. Yes, beta. Ma'am, can you explain the weekly markets again? Let me complete the chapter, then I'll explain again. ठीक है? Okay, ma'am. हाँ. So next is the your shops in neighborhood. Are you having shops in your neighborhood?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. What Yes, types of ma'am. shops Yes, are there? ma'am. What they sell? What is Yes, Ma'am, shop ma'am. sell? ma'am, Ma'am, stationery stationery. shop. Ma'am, What is ma'am, grocery state? Ma'am, stores. of Ma'am, snacks. Grocery Grocery shop. stores. So Ma'am, then stationery shop. stationery shop. Nowadays they have written no mask, no ration, no mask, no Yes, entry. ma'am. Used to write ना इधर देखो स्क्रीन पे देखो बेटा एक आपको रोप जैसी वहां पे बांधी होती है ना 1 person एट अ टाइम ऐसे लिखा होता है. Yes, Yes, ma'am. ma'am. देखो Yes, ma'am. एग्जांपल्स बेटा Yes, शॉप्स ma'am. इस टाइप की शॉप्स होती है नेबरहुड में लाइक दिस Ma'am, in ATM shop it is written. इन इन ATM bank. इन बैंक also it is written yes everywhere it is written now हर जगह लिखा होता है Yes, ma'am. हर जगह even the temples also it is written no mask no entry even the malls also no mask no entry in small shops also clear in grocery shops everywhere it is written nowadays because it has become a need बन गई है अभी don't have any option to wear the mask and mask okay now let's come to the next topic shops in the neighborhood. So there are many shops that sell goods and services in a neighborhood, right? बहुत सारी shops हैं ऐसी जो goods भी बेचती है services भी sell बेचती है. So we may buy milk from the dairy, grocery from the departmental stores, etc. Milk buy करते हैं आप? Yes, we buy Yes, milk from ma'am. the dairy. And grocery, Yes. grocery क्या होता है? Your ration. Look at the screen. This is a grocery shop, right? You got grocery from the grocery shop. So these shops are useful as they are near to our home and we can go on any day of the week. हम कभी भी जा सकते हैं. At any Yes, time we ma'am. can go. Yes. And these are the permanent shops and they are near the roadside stalls like those of fruit, vegetables, vendors, dhaba, shops of mechanic, stationery shop. The one girl has given the example of stationery shop and other shops also. Even we get the things of everyday use like grains, cosmetics, eatables and stationery. So Ma'am, what shops are stores? which Ma'am, Karyana stores. ग्रोसरी को हम किराना स्टोर्स बोलते हैं बेटा इंग्लिश में. किराना को इंग्लिश में ग्रोसरी स्टोर्स बोलते हैं. ठीक है. Okay, ma'am. ओके ठीक है. तो शॉप्स इन द नेबरहुड इज क्लियर. Yes, ma'am. Next, let's the Yes, ma'am. small store in a Yes, locality. ma'am. Now give me some examples of the shopping complexes and malls in Jammu. Hmm. Ma'am, Wave Mall. Ma'am, Wave Wait. Mall. Mall. Ma'am, Big Bazaar. Ma'am, Best Ma'am, Buy. Mall. Ma'am, 17 Best miles. Price. Palm Ma'am, Island is there. Ma'am, 17 miles. 17 no, miles mall. It is not a mall. Beta. Okay, now tell me what you see in the mall. Of mall में क्या करते हैं बेटा? ma'am, different Many types of shops. things. Ma'am, different types of shopping. Ma'am, Different different types And types of of stores. stores. Ma'am, Ma'am, going अच्छा see मुझे and चीज ma'am, बताओ movies. भैया. Movies. stores. One thing. Okay, tell me one thing. Wait. Tell me one thing now. The goods, you said, ma'am, we get different types of goods in the mall. Okay. Now tell me, these goods are branded or these goods are non-branded? branded. Ma'am, they are branded. Branded. Branded goods. कौन सा goods? Ma'am, branded. Branded goods, right? All shopping complexes and malls. These are the other markets in the urban areas. Malls basically कहाँ होते हैं बेटा? Urban areas में होते हैं, cities में होते हैं. आपको कभी villages में malls दिखे हैं कभी? No, No. ma'am. No, ma'am. Mostly कहाँ होते हैं? Urban cities में होते हैं. The markets in the urban areas which have shops at one place, many shops at one place. A market, Ma'am, a like mall, cities. yes. Ma'am, like cities. हाँ, like cities, yes. Like for example, listen to me. Malls क्या होते हैं? Listen to me. Shopping complexes, malls क्या होते हैं? So there are other markets in the urban areas which have many shops at one place and it is called a shopping complex. अगर आप मॉल में गए हो वेस्ट मॉल में आपको फुटवेयर से लेके क्लोथिंग से लेके कॉस्मेटिक्स ईटेबल्स ग्रोसरी Jewelry. देन योर Jewelry. टॉयज ऑल्सो Yes, हर ma'am. चीज आपको वहां पे मिलेगी ना. Yes, क्लोथिंग Ma'am, ma'am. में होते हैं. ma'am, home decoration Yes, also. ma'am. Ma'am, jewelry. Ma'am, game stores also. Yes, game Game stores stores. also. Ma'am, many candy shops also. Yes, your favorite candy. I think आपको candy याद आई. Yes, candy shops are also there. Everything is available there. That too a branded one. आपको नॉन ब्रांडेड नहीं मिलेगा. आपको जो वीकली मार्केट में जो हॉकर्स बैठे होते हैं रोड साइड पे वो दिखेंगे वहाँ पे मॉल्स में. No, ma'am. नहीं. No, ma'am. Malls have malls have many shops at one place. ठीक है.
Okay, And ma'am. one Okay, apart ma'am. from the shops, आपको वहाँ पे बैनर्स दिखते हैं? बैनर्स बैनर्स देखे हैं Yes, आपने? ma'am. Yes, Yes, ma'am. बैनर्स पे ma'am. क्या करते हैं? बैनर्स क्या शो करते हैं? व्हाट इज बैनर्स शो? Ma'am, एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। yes, ma'am. Yes, लास्ट ma'am. चैप्टर में हमने पढ़ा था Advertise. एडवर्टीजमेंट्स होती हैं उसमें, राइट? Yes, बाय Yes, वन ma'am. ma'am. 50% ऑफ। Yes, ma'am. तो Sale. Yes, ब्लूगर्स ma'am. Sale buy one वेरी get गुड, one free. है ना? नीचे लिखा होता है आप ब्रांचेस आर जम्मू, इन लुधियाना, इन Yes, पंजाब, इन ma'am. दिल्ली, Yes, चंडीगढ़, ma'am. लिखा होता है ना? ये Yes, सारा ma'am. क्या है? इसका शॉप्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स। एंड वन मोर थिंग, इफ यू गो इन ए लोकल मार्केट, आपको वहाँ पे एयर कंडीशन मिलता है? No, ma'am. नहीं, बट इन मेनी अर्बन एरियाज we have the multi-storied air conditioned building with shops on the different floors as malls, मिलती है हमें when you Yes, go in the ma'am. Yes, ma'am. multi-storied होती हैं, and various shops on the various floors, different floors होता है, and that too air conditions, and malls sell branded goods and not non-branded goods, All and invest branded. a yes, Yes, and invest ma'am. a huge amount of money in their shop. उनकी shops देखी हैं आपने? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Now tell ma'am. me which mall is this? Wave mall. Ma'am, lifestyle. Mall. Lifestyle is not a Wave mall. mall. Wave mall. Yes, it is Wave Mall. Where it is? Ma'am, it is. Ma'am, in, Ma'am, Ma'am, it's wave mall. Chennai. हाँ, it is Chennai ma'am, or क्लियर? तो आपको समझ आ गया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल्स क्या होते हैं? इट इज क्लियर? Yes, 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 ma'am. 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 नेक्स्ट वी हैव Not द visible. यस बेटा, Ma'am, your screen is not visible. तो It is visible. check your connection बेटा, check your connection. So next is we have the chain of market. Please mute yourself and just answer me whatever I'm asking you. Have you ever heard about the word wholesale, retail? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Down, down सुना आपने? go down, Ma'am, what? Yes, yes, ma'am. down, warehouse, Yes, ma'am. yes, ma'am. warehouse सुना आपने? warehouse. Please, girl, just don't put your loudspeaker on. Loudspeaker on मत करिए, please. Yes. सुना आपने बेटा कभी this one वेयर हाउस सुना आपने? नाम कभी वेयर हाउसिंग, वेयर हाउस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कहाँ वेयर हाउस? Yes, ma'am. Been to warehouse with the parents? Yes, ma'am. Okay, so now listen to me. Ma'am, you are Now let's not start. audible. One girl has just put her loudspeaker on. Please mute yourself, beta. I'm Ma'am, using she is. Wi-Fi. I'm using Wi-Fi, a broadband service here. I don't think there is any problem from my side. Please check your connectivity. Please, I request. Please check No, your ma'am. connectivity. Actually, there was some sounds because that girl has unmuted. Okay. Now the next thing is the chain of markets. So first of all, the people in between the producer and final consumers are traders. Who are traders? The traders buy goods from the producer and supply it to customers. ये हमने पहले पढ़ लिया हुआ, first page it was there. Yes. Producers, consumers, Yes, and Yes, ma'am. ma'am. traders, right? Yes, ma'am. Now, let me tell you again who are producers. Yes, The ma'am. person who produces goods are called producers. Yes, ma'am. ठीक है? Person who buy goods from him is wholesaler. Now यहाँ पे क्या आ रहा है? Wholesaler word आ रहा है. The person who buy goods from him is the wholesaler. And wholesaler gives it to the trader. Trader किसको देता है? Consumer को देता है. Right? देखो, the person who produces goods is called producer. Clear? Ma'am, your voice is breaking. Yes, ma'am. Yes, Now, ma'am. the person who buys goods from producer is called wholesaler, and wholesaler goods देता है trader को, and trader gives the goods to consumer, and this trade is known as the trader is known as retailer. First of all, let me tell you wholesalers क्या होते हैं. The goods that are produced in the factories are first of all bought by the traders. ठीक है? So called the wholesale trade. अब wholesalers क्या करते हैं बेटा? यहाँ पे डिफरेंस है wholesale trade में और retail trade में. अगर हम wholesale की शॉप में जाते हैं तो सास के फादर और मदर, होलसेल शॉप में आपको गुड्स बल्क में परचेज करने पड़ते हैं. बल्क समझते हो? Yes, ma'am. बी They यू are एल के. very Yes, इन ए ma'am. बिग अमाउंट, इन ए लार्ज अमाउंट. आप वहाँ Yes, पे ma'am. जाके आप वहाँ पे जाके 1 kg राइस या 2 kg राइस या 10 kg वेट नहीं परचेज कर सकते. यू हैव टू बाय द गुड्स इन बल्क.
हैवी अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में कुछ आपको परचेज करने पड़े। अब यहाँ पे एक चीज आपको मैं बताती हूँ, अगर आप कुछ ज्यादा अमाउंट में खरीदोगे ना बेटा, आपको प्राइस भी कम पड़ता है। You will get the goods at a lower prices. When you buy goods in bulk, you will get the prices in a very low amount. समझ आ गई? Yes, ma'am. एग्जाम्पल Yes, देखो, ma'am. बुक में Yes, एग्जाम्पल दी है ma'am. आपकी, एग्जाम्पल is given in a book. Yes, ma'am. For a wholesaler trader dealing Excuse in me, grain. Yes, मैम ये जो पेज नंबर 258 पे ये जो अप्लाइड दिया हुआ है, क्या दिया बेटा? अप्लाइड, Applied. यस अप्लाई इट। Yeah, applied. Okay. Yes. Ma'am, this is a shop, ma'am. Here it is asked that what is the difference between a shop and a shopping mall, ma'am? That shop. They are asking. Listen to me. They have given you example of the grocery shops in the nearby neighborhood. उन्होंने पूछा है कि what is shown in the picture? ये पूछा है आपसे. The answer will be, क्या आंसर होगा? Shop. Grocery store. Shops in the neighborhood. नेक्स्ट इन्होंने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट एंड अ शॉपिंग मॉल, दोनों में डिफरेंस क्या है? मैम शॉपिंग मॉल में की ब्रांडेड चीजें मिलती हैं। मॉल भी शॉपिंग मॉल्स कैसे होते हैं? दे आर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग. शॉपिंग मॉल्स आर they are मल्टी स्टोरीड multi-story and very big. बिल्डिंग, राइट? One store building. हाँ. And the shops in neighborhood, they sell the useful things, and these are near our house and we can go on any day of the week. Clear? These are the Yes, ma'am. grocery shops or departmental stores. इस तरीके से होता है. Okay. Okay? Is clear now? Okay. Yes, Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Okay. आगे देखो, we will study the example. For example, Yes, ma'am. selling grain would pick up grains in quintals, मतलब 100 kg के हिसाब से goods परचेज करते हैं, and not in few kilos. अगर आप चाहोगे 1 किलो का मिले, 1 किलो नहीं मिलता है. 100 kg to 100 kg के हिसाब से जो है गुड्स परचेज करने पड़ते हैं, एंड अगर वो ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं उनको प्राइस भी कम पे करना पड़ता है. ठीक है? होलसेल ट्रेडर समझ आ गया? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, पेरेंट्स की होलसेल, आपने फादर मदर को बोलना मैंने गो आउटसाइड, जस्ट उनको बोलना कि आपकी लोकेलिटी में कोई ना कोई होलसेल की शॉप होगी. उनके पास देखना, अगर राइस की होलसेल शॉप है उनके पास सिर्फ आपको राइस ही मिलेंगे. व्हीट फ्लोर का व्हीट फ्लोर ही मिलेगा, Yes. एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है? Yes, पल्सेस ma'am. मतलब सीरियल्स ही मिलेंगे. नेक्स्ट हमारा आता है रिटेलर्स. अब देखो, होलसेलर्स ने क्या किया, बहुत ज्यादा अमाउंट में, ये होलसेल का एग्जांपल देख लो बेटा स्क्रीन पे, ये होलसेल मार्केट, दिस एग्जांपल ऑफ होलसेल मार्केट. लेट्स मूव टू द रिटेल मार्केट. अब रिटेल मार्केट क्या होता है बेटा? अब होलसेल मार्केट से गुड्स हैं आर सोल्ड टू द ट्रेडर्स, और ट्रेडर्स को हम लोग बोलते हैं रिटेलर. क्या बोलते हैं? रिटेलर. अब एग्जांपल डिफरेंस समझ लो. होलसेलर्स ज्यादा अमाउंट में गुड्स परचेज करते हैं, एंड रिटेलर्स कम अमाउंट में गुड्स परचेज करते हैं. क्लियर? Yes, एंड जो ma'am. शॉप्स हमारी लोकेलिटी में, सुनो मेरी बात, जो शॉप्स हमारी लोकेलिटी में है, ऐसी शॉप्स देखी है आपने लोकेलिटी में, लाइक दिस, इस टाइप की शॉप्स एवर सीन? Yes, ma'am. यहाँ पे Yes, आपको क्या ma'am. मिलेगा? यहाँ पे आपको हर एक चीज मिल जाती है, मिलती है ना, हर एक चीज मिलती है. Yes, ma'am. तो ये क्या है आपकी रिटेलर शॉप वी कैन से. आपको यहाँ पे बिस्किट्स भी मिलेंगे, मैगीज भी मिलेगी, आपको यहाँ पे कंफेक्शनरी भी मिल जाएगी, आपको यहाँ पे ईटेबल्स भी मिल जाएंगे. यू विल गेट डेयरी प्रोडक्ट्स ऑल्सो एंड एवरीथिंग अंडर वन रूफ. ये क्या होता है आपका? रिटेल. होलसेलर रिटेलर आर क्लियर? इट इज Yes, क्लियर? ma'am. Yes, Now ma'am. we have the other markets. This we have already discussed in the first para, that is in present time we have goods. These are sold by online marketing. Online marketing होती है? हेलो? Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. बाय कैसे करते हो? Yes, ऑनलाइन ma'am. मार्केटिंग में बाय कैसे करते हो बेटा? ऑनलाइन मार्केट में कुछ कैसे बाय करते हो ऑनलाइन मार्केट में आप? बिल मिलता है क्या होता है? मैम थ्रू कार्ड, हाँ, थ्रू कार्ड. कौन कौन से कार्ड होते हैं? डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड. डेबिट कार्ड. एंड विद द सेल ऑर्डर प्लेस करते हो, आपको शॉप पे जाना पड़ता है? डू यू गो टू द शॉप? नो मैम. Order various goods over your phone, over your laptops. Yeah, cash on delivery option is also there. And without going to the shop. Sometimes क्या होता है
agents of the company come to sell the products to the users directly. कभी कभी आपके गेट पे आते होंगे salesmen. Have you seen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, those are the agents of the company. So the sales representatives. Similarly, Yes, ma'am. but say MR medical representative सुना कभी आपने? Yes, ma'am. हाँ, तो ये क्या करते हैं? They give the samples of the medicines. The doctor, after being satisfied with this birth, advises the patient to use them. ऐसे ही होता है. Samples देखिए कभी आपने samples. Have you ever seen samples? Yes, ma'am. सैंपल के बेसिस पे सैंपल्स के बेसिस पे वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि इस सैंपल का इस कोर्स का क्या बेनिफिट है. ठीक है, आपको समझ आ गया. अदर मार्केट्स कौन सा? ऑनलाइन मार्केट के बारे में बात करें हम लोग, जहाँ पे आपको क्या मिलता है? ऑनलाइन मार्केटिंग प्लस होम डिलीवरी. ठीक है. Okay, ma'am. Okay, now next topic we have the buying and selling in different market. Last para 259. Last topic it is there. ये क्या लिखा है? Now we now know, अब तक में मालूम चल चुका है that how goods are manufactured or packaged at different factories or from different places. Please behave properly, beta. Okay, underline this line. We now know how goods are manufactured or packaged at factories or from different places, pass from one trader to another before finally reaching to the consumer. अब हमें मालूम चल गया कि goods कैसे प्रोड्यूस होते हैं और कैसे वो कस्टमर तक पहुंचते हैं. Now you have understood? Producer, then we have wholesaler, we have retailer, then we have the consumers. Yes, Right? ma'am. Yeah. Now we have understood the market. A market क्या है? Is a place from where the wholesaler buys the goods, or the market from where the retailers buy is not always known to us. हमें पता नहीं है. Do you know कि wholesalers कहाँ से सामान लाते हैं? Do you know? No, ma'am. Do you know कि retailers कहाँ से सामान लाते हैं? कहाँ से goods लाते हैं? We don't. Right? No. And the next thing is we see and buy only the final product at our own convenience from a shop in our neighborhood. For example, एक pen चाहिए, ठीक है? You want to buy a Ma'am, pen. your voice is breaking. Okay, you want to buy a pen. Am I audible, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. dear. एग्जाम्पल देती हूँ आपको. You want to buy a pen. ठीक है, आप पेन परचेज करें नेबरहुड शॉप में जाओगे, या पेन परचेज करने मॉल में जाओगे, या आप पेन परचेज करने वीकली मार्केट का वेट करोगे, या पेन परचेज करने के लिए आप ऑनलाइन मार्केटिंग करोगे. क्या करोगे पेन परचेज करने आप? Shop. Ma'am, we will go to the nearby हाँ. shop. Ma'am, तो we इट will go to डिपेंड्स ऑन nearby shop. चॉइसेस. ये हमारी चॉइस है ना? हमारी चॉइस है, हम कहीं पे भी जाए. Yes, ma'am. We are the customer. Yeah, we are the customer, and you know the customer is the most important thing in the market. कैसे होगा? नो डाउट गुड्स तो मार्केट में है, पर जब तक कस्टमर उनको परचेज नहीं करेगा तब तक गुड्स क्या है? वेस्ट है. क्या है गुड्स? Yes. वेस्ट. Yes. And also different people have different buying capacity as they have unequal income. जो people है हमारी कंट्री में, सबकी इनकम सेम है? Yes, ma'am. No, ma'am. नो. सबकी सैलरी, सबकी इनकम सेम है. तो सब लोग जो हैं उनकी बाइंग कैपेसिटी सेम नहीं है. कोई अगर 10,000 गुड्स परचेज कर सकता है तो कोई सिर्फ 5,000 के ही कर सकता है. हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं बाइंग कैपेसिटी. क्यों? बिकॉज लोगों के पास मनी नहीं है. पीपल हैव अनइक्वल इनकम. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट लास्ट पैरा टॉक्स अबाउट द बायर्स. बायर्स क्या करता है? लाइक वी आर द बायर्स. ठीक है, बायर्स क्या करते हैं बेटा? प्लीज म्यूट योरसेल्फ. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. सामिया. Ma'am, my name is Samya. Yes, Samya, please mute yourself. Okay. Now, line number 4, the buyer eventually means finally. Eventually क्या होता है? Write the pencil. Finally. Finally. The buyer finally buy products that fits well within their income. Buyer से वही goods purchase करता है जो उनकी income में fit बैठता है. And similarly, sellers also earn profits unequally. A seller in the weekly market earns much less than a seller in the mall. जो सेलर देखो, जब मॉल में जाते हो कुछ चीज परचेज करते हो, वहां पे बार्गेनिंग करते हो? मॉल में जाके बार्गेनिंग करते हो? No, ma'am. बार्गेनिंग नहीं करते हो. बट व्हेन यू गो इन द लोकल मार्केट, इन द वीकली मार्केट, डू यू बार्गेन करते हैं वहां पे? आप बार्गेनिंग करना समझते हो?
No, ma'am. Yes, अच्छा, ma'am. हाँ Yes, क्या होता है बेटा, बताओ बार्गेनिंग करना क्या होता है, ऋतुवी? Ma'am, ma'am. if the ऐसे बहुत price बार is करना. any things price is 20 rupees, we will change it to 10 rupees. That means bargaining. Yes. For example, if you go in a weekly market, ठीक है, suppose आपने कोई सूट परचेज किया 1000 रुपीज, shopkeeper is saying it's 1000 rupees, 1000 rupees price है, but you are saying no, we'll give only 800. It is bargaining. Clear? But this thing doesn't happen in mall. जब आप मॉल में जाते हो, if a thing carries 1000 रुपीज, अगर 1000 रुपीज का होगा, कॉस्ट पे 1000, आपको सिर्फ 1000 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे. यू कांट बार्गेन इन द मॉल. क्लियर? Yes, ma'am. हाँ. Then the buyers of today have a variety of other means also, as we've discussed earlier, that they can go to a weekly market, they can go to a shop, they can go to a shopping complex and mall, they can go to a retailer shop, wholesaler's mall, shop, or they can also buy goods through online marketing and home delivery. This is the shopping experience is certainly one of the convenience for all the buyers. So the chapter is clear. Market around us. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubt? Yes, ma'am. Yes. Doubt is there? No, ma'am. Yes, ma'am. Which doubt? No, ma'am. No, Okay. ma'am. No, ma'am. Just do one thing. Today or by tomorrow, I will send you the answers of the two chapters done during this week. Try to find out the answers Okay, of ma'am. the others. Okay, Okay, ma'am. beta. To me. On Okay, Monday, we ma'am. are meeting again. No, beta, pass. Beta. On Monday, history is next chapter is. कौन सा chapter है बेटा? Next is next chapter is religious ideas in the medieval period. Okay. Yeah. But before that, just tell me one thing. Have you done this chapter, understanding media? Have you done? No, ma'am. No, ma'am. No, No, ma'am. You have done. No, ma'am. Up to state government, you have done. Three chapters you have done, na, under civics. Yes, ma'am. Three you Yes, have ma'am. done, na? Yes, ma'am. Okay. Let me see what I can do. So, take care of yourself, study well. Yes, beta. Ma'am, please send the syllabus. What I told in the beginning, मैंने बोला tomorrow, by tomorrow I'll send the syllabus for your term 2 and syllabus for the unit test Ma'am, please 3. explain weekly markets. Weekly market क्या होता है सुनो? This is called the weekly market because it held on a specific day of the week. Like Sunday market लगता है, Monday market लगता है, इसे weekly market. यहाँ पे जो shops जो permanent नहीं होती हैं, we can see the permanent, maybe the permanent shops of the hawkers nearby. Road side पे hawkers बैठे होते हैं, ठीक है? And there are thousands of such market in India. बहुत सारे ऐसे markets हैं इंडिया में, and they people come here for the everyday requirements. Clear? Traders usually set shop for the day and then close them in the evening. शाम को shops बंद कर देते हैं. We get most of the goods at a cheaper rate. जो रेगुलर मार्केट से हमें cheaper rate पे goods मिलते हैं यहाँ पे वीकली मार्केट में. Clear? Clear? Then there are most of the competition in the weekly Yes, market. बहुत से ma'am. competitions होता है. अगर आप मार्केट में गए हैं, टॉप मार्केट में गए हैं जम्मू के, you can see वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे जो हॉकर्स हैं, वहाँ पे जो सेलर्स हैं, वो शाउट करते रहते हैं, है ना, प्राइसेस बताते रहते हैं. ठीक है, Yes. ठीक है. एडवांटेज क्या है इसका वीकली मार्केट का? दैट वी गेट मोस्ट ऑफ द थिंग अंडर वन प्लेस ओनली. ठीक है. फ्रूट्स की बात करें, आपको फ्रूट्स मिल जाते हैं. यू गेट ग्रोसरी, you get rice, you get clothes, you get everything you will get under the one roof, that is weekly market. That is clear? Yes, ma'am. Ask me about the weekly market. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just give you ask me. Yes, ma'am. Okay. Now everything is clear. Yes, ma'am.